8 former Navy personnel in Qatar were given death sentence by a Qatar court, and now a Qatar court has accepted the appeal against the order, and sources have told NDTV that the appeal could be heard soon. Remember, these are 8 former Indian Navy personnel we are talking about who were given death sentence in Qatar. Of course, they had led warships for India earlier. They were working at a private firm. But now the big development in this is that Qatar has accepted the appeal against the death sentence of 8 Indian sailors. Of course, it's important given the fact that India had also said earlier, in fact, the Ministry of External Affairs had said that it will continue to provide consular assistance to Indians there and will appeal the order as well. Of course, there are multiple legal options that India was looking at. Of course, appealing at a higher court or the appeal court in Qatar, also invoking international law in this. But finally, now Qatar has accepted. Remains to be seen how this pans out, because remember, it was an extremely controversial case, and 8 Indian Navy personnel, ex-Indian Navy personnel, were given death sentence by Qatar. India, of course, said that it was shocked at this order earlier. This is what the Ministry of External Affairs had said, and it also said that it will appeal the order as well. And finally, Qatar has accepted. What were the legal options that India was looking at? Well, India was looking at, as I said, appealing at a higher court. Well, of course, Qatar has an appeal court as well. India was also looking at invoking international law, invoking, the various international conventions that are there in this as well. Of course, multiple countries have banned death sentence and have sort of shifted away from capital punishment. But Qatar, giving death sentence to 8 former Navy personnel of India from India is something that really shocked India. In fact, they were working for a private firm. In fact, there were allegations of espionage against them as well. There were really no comments as far as that is concerned. In fact, India had said that they will appeal this order. Uma Shankar is now joining us live on the broadcast. So, Uma, भारत ने ये पहले भी कहा था कि ऑर्डर को अपील करेगी ये, और उन्होंने कहा था कि ये कॉन्सुलर असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती रहेगी. आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, कब ये हियरिंग हो सकती है इस अपील की? जी देखिए, कल जो अपील दायर की गई है उसको वहाँ की कोर्ट ने जो है वो उसको मंजूर कर लिया है, और अब कोर्ट जो है उस अपील को अध्ययन करेगा और जल्द ही एक सुनवाई की तारीख जो है वो निश्चित की जाएगी. जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि सुनवाई की तारीख बहुत जल्द होगी, 1 हफ्ते के भीतर होगी. एक तारीख जो है वो 30 नवंबर की निकल कर सामने आ रही है, लेकिन इस बात का कन्फर्मेशन अभी नहीं है कि 30 नवंबर को ही क्या है वो सुनवाई होगी. भारत के पास अपील के 2 मौके हैं. इन 8 भारतीयों के लिए ये पहला अपील है जिसको कि स्वीकार किया गया है, और इसके बाद इस अपील के ऊपर कोर्ट का फैसला क्या आता है उसको देखने के बाद फिर से एक दूसरा अपील भी दायर किया जा सकता है. अगर पहले अपील में मदद नहीं मिलती है, सजा से जो राहत नहीं मिलती है उन 8 भारतीयों को, तो भारत की कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी दोनों अपील की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए, और अगर इसमें राहत नहीं मिलती है तो फिर आगे जो कतर के अमीर हैं उनके पास इस मामले को लेकर जाया जाए. लेकिन अभी देखना होगा कि जिन आधार पर यह अपील दायर की गई है उसके ऊपर कोर्ट का क्या कहना है. भारत की तरफ से जो जानकारी अभी तक निकल कर सामने आई है वो ये है कि बहुत ज़्यादा सबूत इस बात के नहीं है जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं. हालांकि आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं है, और जो सबूत पेश किए गए हैं क्या वो कोर्ट में एडमिसेबल हैं भी या नहीं, इन सब बातों पर चर्चा होगी जब अपील पर सुनवाई शुरू होगी. अभी बड़ी खबर यही कि इन 8 भारतीयों के अपील को कोर्ट ने वहाँ पे मंजूर कर लिया है और उस पर जल्द ही सुनवाई शुरू होगी.